Okay, so I'm giving you the actual group task of HPCL. Interesting one also. And this task is related to prioritizing the points. So it's aeroplane crash incident. He has given you 13 items and you are to prioritize these items. Which one do you think is number one, number two, so on and so forth? How we will start this is, initially I will ask each one of you to give me your three top priorities, each one of you. And then I open the house and you are to make 5 priorities after consensus. So give yourself couple of minutes और मेरे को 3 अपनी top priorities fix up करो. What do you think are the 3 top priorities? धीरे धीरे बोलो.
Okay, so everybody has noted. Now, Yes, each one of you is to give me list of top three and tell reason also. Then we open the house for discussion. Starting with Sahil. Sir, I've keep the first thing, first priority as the first aid because the impact is very tremendous. Because if we have crashed the in desert, the impact will be very tremendous, and most of the people get wounded. So they will require some first aid. And second priority is water because we are in desert. So we have to keep ourselves hydrated. So second priority should be given to the water. And third priority I've given to the blanket because at the night time the means the chances of hypothermia can be improved. Means hypothermia can improve. So I've given the third priority to my blanket for keeping ourselves warm. Okay, now Arpit. सर मैं सबसे पहले 75 लीटर ऑफ वाटर्स को प्रायोरिटी दूंगा, क्योंकि सर प्लेन क्रैश हुआ है तो मोस्ट प्रोबेबली ये भी हो सकता है कि फायर इंसिडेंट हो आसपास, मतलब फायर हो तो लिमिटेड अमाउंट ऑफ वाटर से सर उनको फायर को बुझा के जो एरोप्लेन से जो कुछ मटेरियल या कुछ ऐसी चीज जिससे कि वो उनको सरवाइव करने में हेल्प कर सके वो ले सके। दूसरे पे मैं देना चाहूंगा सर फर्स्ट एड, क्योंकि प्लेन क्रैश हुआ है तो डेफिनेटली वो लोग इंजर्ड हुए होंगे। एंड थर्ड पॉइंट पे सर मैं ये पीनट को देना चाहूंगा, क्योंकि प्लेन क्रैश हुआ है, डेजर्ट एरिया है, तो उनके पास खाने के लिए भी कुछ होगा नहीं, पानी हमने पहले ही दे दिया है, तो सर थोड़ा उनके पास खाना भी होना चाहिए। Okay, Anuj. Good evening. So we have been given a very challenging situation, and we have to prioritize three things. So my first priority will be first aid box, which is the most important thing I think for survival. Second priority I have given for the water, 75 liter of water, as it will be also required as it is a desert area. And third thing, as we said, the blanket is required because of the we know desert has extreme cold nights also. So to survive that, will I'm prioritizing third as a blanket. Thank you. Okay, Jobin. Good evening, friends. Sir, are you able to see me? Yeah. Yeah, okay. So, good evening, friends. So, the task given to us is that to find and to prioritize three things among the 13 things that are given. First thing will be obviously 75 liters of water, because without water, no person can survive, how much fit or how much lean or how much fat he or she is. So 75 liters of water. Not only that, because they have happened to because a crash has happened, so they have to actually, even if there are some wounds, they have to actually clean off the wounds. So they require actually some piece of water also. And my second priority will be first aid box, just as others told, because you can see how badly they could be wounded, because a plane which had passed the last sign of civilization 15 minutes back. And according from the information given, I can understand that there was almost there were likely 11 to 12 people in the plane. And for a plane like that, maybe a small plane like that, it should actually maybe glide at some speed. Even though it could be gliding at some speed, it will hardly be 50 kilometers away from the last sign of civilization. So they will surely be having to see some kind of first aid or some kind of emergency treatment. And the third thing would be aeroplane blankets, because at night deserts become, because of this continental climate, deserts become really cold, and they do require a blanket to keep them warm. And as time passes, they can actually travel the distance and then solve the problem. Yeah, that's my point. Okay, now Avinash. सर इन माय ओपिनियन सर जो थ्री पॉइंट जो हमें सेलेक्ट करनी चाहिए, पहला सर फर्स्ट एड बॉक्स, क्योंकि प्लेन क्रैश हुआ है, हम सरवाइव कर चुके हैं लेकिन वुंड्स के कारण हम इंज्योर हो सकते हैं, तो फर्स्ट एड बॉक्स उसलिए हेल्प करेगा। और सर सेकंड पॉइंट Okay. Am I audible to you?
Am I audible to you now? Yes, sir. Okay, so Avinash, you have spoken. Yes, sir, मैंने Okay, Nikhilesh. Sir, I am audible, sir. Yes, yes. Sir, as per my understanding, I can divide this group task into three aspects: essential, desirable, and unessential or undesirable. So my three priorities are, like, first of all, the crash is going to happen. So first aid box is the essential utilities to prevent ourselves by wound or some blood clotting should be there. So my first priority is first aid box. Second is definitely a water, because we are in a Sahara desert. So many people, 6 members are might be a thirsty. And third point is differ from, like, depend upon the condition. If the crash is in daytime, then I choose a cosmetic mirror to indicate person who are at height place और फ्लाइट जो उड़ रहा है उनको इंडिकेशन आइडेंटिफाई करने के लिए, टू रिफ्लेक्शन से पता लगाएंगे कि यहाँ क्रैश हुआ है. If it is in night time, crash is in night times, then to prevent ourselves from winter, I choose a blanket. Okay. Okay, now I think everybody has given his point, 3 points. Now we will have a discussion, and after consensus, you people are to provide a list of 5 top priorities in this list, which you think are the most important, right? So now start your discussion, and then after consensus, you get it. Jobin and Nikhilesh, unmute yourself. So here I think we have to presume one thing here, that the pilot has already given the signal, like mayday, mayday. If anything bad is happening to the means plane, the pilot's first signal is mayday, mayday. So this is a signal for rescue, means some kind of rescue operation can further proceed. This kind of signal. So first means here we have to, means peanut is not much required, because we can stay for 2 to 3 days without food. We can stay. So our first priority should means the first priority should be first aid box, second is a water, and third should be our blanket, or then fourth priority we can keep peanut as an option. So I will Already been said by me, na, we can divide our group task into essential, desirable. Essential means immediate service, हमको वहाँ पे Most क्या important. चाहिए to survival. Most Second is important. essential, like कि हमको 4 to 5 hour like for journey करनी है या कुछ stay करना है, तो हम क्या item रख सकते हैं for stay there. And sixth one is undesirable, जो हमको need नहीं है और हम वहाँ से prevent हो सकता है. So the first is the first aid box, and I thought everyone agree with the first aid box. Yes, And yes, we have yes. to know, first of all, we have to know the actual conditions, like already been mentioned by me, like whether the crash is in daytime or night time, what is the suitable condition. It So we doesn't have matter. I think So it is the not a condition, matter. it It is doesn't not matter. just matter. हमें हाँ. फूड की प्रायोरिटी होनी ही चाहिए. फूड एंड वाटर, दिस इज एसेंशियल. तो मुझे Okay. लगता है कि टॉप 5 में पीनट आना ही चाहिए. Peanut आएगा, yes. In fifth Avinash, priority. हम Avinash, I prioritize think बस से चालू कर देते हैं, so that साहिल ने बोला ना, लेके जैसे मेडे मेडे हमने इंडिकेशन दिया, तो हम- इफ यदि डे टाइम में हो तो मेडे मेडे सुन के वो जो हमारी रेस्क्यू टीम है वो डेफिनेटली वहां से वहां बाहर पे आए, रेस्क्यू उनको करने आएगी. एज अ इंडिकेशन के लिए हम लेट अस सपोज मेडे मेडे, तो हमको सर्च ऑपरेशन डेफिनेटली चालू हो गया होगा. तो हाँ, विद इन search हाफ operation. एन आवर एंड 1 आवर की हमको पता है कि 15 मिनट्स बैक लॉस्ट कर गए, तो जो रेस्क्यू टीम है उनको पता होगा कि हम कितने आगे निकल चुके हैं और 15 मिनट पहले ब्रेक हो गया है. तो उनके पास एस्टिमेटेड टाइम होगा, लेट अस सपोज कि वो हाफ एन आवर या 1 आवर हमको सर्च कर ले. तो फॉर इंडिकेशन पर्पस वी आल्सो चूज द मिरर, लाइक सन की रेज आएगी, रिफ्लेक्शन पड़ के उनको जाएगा, इट्स अ इंडिकेशन टू आइडेंटिफाई दैट आवरसेल्फ. करेक्ट. बट हमें अज्यूम नहीं करना चाहिए कि I think- वो जो सर्वे जो आपने बोला कि वो सिग्नल गया है, वो हम अज्यूम नहीं कर सकते. वर्स्ट केसेस कुछ हुआ ही नहीं होगा. सो वी हैव टू टेक द लॉन्ग टर्म सिनेरियो आल्सो, कि अगर हमें 4-5 दिन भी सर्वाइव करना पड़ता है, सो मिरर माइट नॉट बी अ गुड थिंग टू हैव, मे बी अदर ऑप्शन. We have to- हम लोग को साथ में हम ये भी कर सकते हैं कंसीडर्ड इन अ लेटर स्टेज. फर्स्ट ऑफ ऑल वी जैसे हम अकॉर्डिंगली, जैसे हमने हम लोगों को थ्री थिंग्स तो हमने प्रायोरिटाइज कर लिया: वाटर, फर्स्ट एड एंड पीनट्स. देन फोर्थ थिंग के मेरे हिसाब से मेरे को लगता है कि मैच बॉक्स होना चाहिए, क्योंकि इनकेस अगर हमें 3-4 दिन स्टे करना पड़ रहा है तो हम सिग्नल मैच बॉक्स के थ्रू भी दे सकते हैं, फायर सिग्नल दे सकते हैं, स्मोक सिग्नल दे सकते हैं. तो इसलिए हमें मैच बॉक्स को भी अपना फोर्थ प्रायोरिटी में रखना चाहिए. इनकेस अगर हमें फूड बनाना पड़ रहा है, फूड अवेलेबल नहीं है, पीनट्स खत्म हो गए, या तो हमें कोई हंटिंग करनी पड़ रही है डेजर्ट एनिमल की, तो एटलीस्ट कम से कम उसको पका के कुछ खा तो सकते हैं. करेक्ट. यस, मैं एग्री मतलब करता हूं कि हमको ना, हमें मैच बॉक्स हमको यहाँ से मतलब 2 से 3 दिन लेके चलना पड़ेगा. लगता हमको 2 से 3 दिन, मतलब हमको लेके चलना पड़ेगा कि हमको 2 से 3 दिन का हमारा मतलब
हमारे को 2 से 3 दिन लगेंगे कि हमको रेस्क्यू होने में, हमको ये प्रेज्यूम करके चलना पड़ेगा यहाँ से। क्योंकि Correct, ऐसे correct. केसेस में हमने देखा है कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन होता है बहुत टाइम लगा सकता है, 4, 5, 6, हमें पता नहीं कितने दिन हमें सरवाइव करना होगा। तो मुझे लगता है कि ग्लासेस से ज्यादा मैच बॉक्स हमारे लिए फायदेमंद रहेगा, क्योंकि हम उससे फायर जलाने के लिए भी यूटिलाइज कर सकते हैं। I think fourth priority we have to keep the peanuts. Fourth priority we have to keep the peanuts in the fourth priority. In addition to that, जो हमारा क्वेश्चन है ग्रुप टास्क का, उसमें लिखा है कि 6 पैसेंजर के साथ साथ को कैप्टन और क्रू मेंबर भी है। तो को कैप्टन और क्रू मेंबर को इट माइट बी चांसेस कि वो लोकेलिटी के बारे में पता हो, कुछ उसकी कंडीशंस के बारे में पता हो, डेजर्ट कैसा है, कितने दूर है, कितने कैसे सिग्नल हम पहुंचा सकते हैं। तो वी कैन ऑल्सो हेल्प विद द को कैप्टन एंड क्रू मेंबर कि हम वहां से कैसे जल्दी से जल्दी बाहर निकले, रेदर देन कि हम सोचे कि 2-3 दिन हमको स्टे करना पड़ जाए। बराबर है I बेटा। think because ये वहां पे कोशिश डेजर्ट है ना, करेंगे। वो डेजर्ट एरिया है, वहां पे उनको भी कुछ ज्यादा आइडिया होगा Exact नहीं, क्योंकि हम coordinates, हाँ। सिविलाइजेशन मेरा एग्जैक्ट मेरा कोऑर्डिनेट्स इसमें हमको पता नहीं होंगे वहां पे, पॉइंट ऐसा है कि जैसे क्योंकि वी आर इन द डेजर्ट एरिया। डेजर्ट इज वेरी बिग एंड वी कैन नॉट अस्यूम दैट वी कैन। लेकिन इसमें मेरे जैसे को कैप्टन और क्रू मेंबर है ना, उनकी फ्लाइट लेटर सपोज चलती रहती है सारा डेजर्ट के ऊपर से, दिन में नहीं तो एक बार वो अप डाउन जा रहे, तो वो सडनली क्रैश कर गया, तो इट माइट बी अ चांसेस कि उनको कुछ पता हो, आइडिया हो कि हम कैसे जल्दी से जल्दी वहां से निकल सकते हैं, रेदर देन 2 to 3 स्टे के लिए। तो हम ऐसा कुछ प्लान बनाएं कि रेदर देन 2 to 3 के अकॉर्डिंगली हम बनाएं, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हम सेम डेज 8 to 10 डेज और 12 आवर्स के अंदर निकल जाए। यस, तो हमारी कैसे प्लानिंग कैसे उसी करें? हिसाब से रहेगी कि हमें कम से कम स्टे करना पड़े, बट हमें प्रिपेयर फॉर वर्स्ट के लिए वर्स्ट फर्स्ट में वी प्रिपेयर हैव टू करना पड़ेगा। वर्स्ट केस सिनेरियो वी हैव टू प्रिपेयर। तो हमने प्रायोरिटीज क्या क्या किया है? फर्स्ट एड बॉक्स किया है, फर्स्ट एड बॉक्स, वाटर, वाटर किया है, ब्लैंकेट किया है, मैच बॉक्स देन किया इन है, मैच बॉक्स आई थिंक peanut वी हैव टू Peanut. फूड इज एसेंशियल, फूड इज पीनट। तो 5 हमारा सिलेक्ट फाइनलाइज हो गया। Guys, one thing. I think we can Guys, also I would like to add one thing, guys. Submit. Actually, what is the use of a matchbox without a candle or any kind of firewood or something? we Because have we to search already for have the matchbox firewood. in hand. We have to search No, for the firewoods or how wood. does no, I don't think whether we can get firewoods on deserts apart So- from cactus plants and all. So I don't know whether a matchbox would be a good option. I would surely go with blankets, because blankets are anyway essential. Blanket is Blanket is already there. Blanket is already there. considered. Blanket is already Yeah. there in third option. Yeah, Third but priority. I'm agreeing with you matchbox. that so you are I think we have to go for the shelter making. I think we have to go for the shelter making. Shelter मेरा making. इसमें पॉइंट है कि हम कॉस्मेटिक मिरर को क्यों नहीं कंसीडर कर रहे हैं, रेदर देन कि वो एज अ इंडिकेशन दे सकता है रिफ्लेक्शन के तौर पे कि हम यहाँ पर है। बट So अगर instead of इंडिकेशन using the, नाइट में अगर I हमें think देना so, होगा तो हम नाइट में इंडिकेशन कैसे देंगे? प्रॉब्लम यहाँ पे है हमें, क्योंकि हमें प्रायोरिटाइज करनी है चीजें, तो हमें डे और नाइट दोनों के हिसाब से करना पड़ेगा। इनकेस सपोज करिए कि अगर हमें रेस्क्यू करने की टीम नाइट रेस्क्यू भी होते हैं, अगर नाइट में आ रही है, तो फिर हम उनको कैसे रेस्क्यू के लिए उनको कैसे सिग्नल देंगे? तो इसलिए मेरे को लगता है कि मैच बॉक्स होना बहुत कंपलसरी है। नहीं, लेकिन मेरा पॉइंट है मैच बॉक्स, हमारे पास प्लेन का सामान होगा तो मैच बॉक्स उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लेन क्रैश का सामान हो सकता है। मैच बॉक्स वही ना, माचिस जो हम घर में मैच बॉक्स कंटिन्यूसली, मेरा इस पे पॉइंट है मैच बॉक्स है। जैसे लेटर सपोज दिन में नाइट की, चलो नाइट के लिए इट्स अ बर्निंग पर्पस हो सकता है, लेटर सपोज दिन में हम बात करें तो मैच बॉक्स जो घर में यूज होता है, माचिस का डब्बा, तो हम उसको कंटिन्यूसली घिसेंगे फिर जलाएंगे, घिसेंगे जलाएंगे, और उसकी लौ जो होती है, जो बर्निंग फ्लेम होती है, इट्स अ वेरी माइन्यूट, और वो डेजर्ट दिन में एज अ गर्म में क्या मतलब, मेरे उसका पर्पस समझ नहीं आ रहा है। पर्पस ये है एनिमल को कुक करने के लिए भी, जो अगर फूड है, फूड के लिए भी यूज हो सकता है, थोड़ा हीट के लिए यूज हो सकता है, सिग्नल के लिए यूज हो सकता है। सो मैच बॉक्स ऐसे देखा जाए तो मे बी इट इज प्रोवाइडिंग 3 or 4 Anuj, the thing was that if we had a firewood or candle, then matchbox would have been good. But without firewood or candle in the desert, we cannot expect to find anything apart from cactus plants. That is why matchbox is not that much a good option. Yeah, totally. We already have. Okay, so I think we have to go for that. the shelter making. For shelter making to for keeping ourselves warm, or I don't think a single we can flame summarize, from a matchbox can help us keep as a warm. group we can consider first as a first aid box, second is 75 liters of water, third for we can choose as a 50 packets of peanuts because we have to survive more hours. And now we can discuss like first 3 priorities are over. Now we can discuss which one is fourth or fifth. Fourth is blanket. Fourth is blanket. Blanket because hypothermia वगैरह, yeah, cold temperature से बचने के लिए that we have to. Fifth, now we But have I to. think fifth point should be
मैच बॉक्स, क्योंकि अगर हमें पार्ट चाहिए जलाने के लिए तो शायद प्लेन क्रैश हुआ है तो उससे कुछ हमें मिल सकता है जो यस यस उसको यस यूज कर सके हम्म, जलाने के लिए। एक ये भी पॉसिबिलिटी है। अगर हम ये हाँ वी कैन पॉसिबिलिटी देख रहे हैं कि अगर हमारे पास कोई वुड ही नहीं है तो एक ये पॉसिबिलिटी भी देख सकते हैं कि हमारे पास प्लेन क्रैश हुआ है तो कुछ सामान वहां से मिल सकता है जो मिल हम सकता है, हाँ। जलाने के लिए यूज कर सकते हैं। It और वहां पे यहाँ पे दिया हुआ है ना पिलो भी, वहां पे पिलो भी दिया हुआ है, मतलब कि एरोप्लेन में पिलो भी, हम पिलो को भी मतलब जला के कुछ इंडिकेशन दे सकते हैं, मतलब उसको यूज ना करके पिलो को जला के यूज कर सकते हैं मैच बॉक्स की मदद से। इसमें तो इसमें अपन ये कर मेरा एक सकते हैं। नहीं, फिर इसमें फिर मेरा क्या हो जाएगा, वी आर क्वेश्चन यूजिंग एज अ पिलो जनरल, आल्सो, दैट इज नॉट ऐसा इसमें मेरा एक्चुअली कॉन्ट्रडिक्ट। हम मैंने पिलो को यूज कर रहे हैं, सो वो हाँ, लिस्ट में आ जाएगा ना उसमें, सो आई नहीं, थिंक वी अच्छा, शुड कंसीडर दैट। देखो ओके। ब्लैंकेट हम इसलिए भी कंसिडर कर सकते हैं, एक तो फॉर मेकिंग अ टेंट, मतलब फॉर शेल्टर एंड फॉर प्रिवेंट अवर सेल्फ फ्रॉम विंटर, दो पर्पस होता है, हम्म, तो ब्लैंकेट यस को यस कंसिडर करना है। एक मेरा यस, पॉइंट है लाइक ब्लैंकेट। वी आर इन अ सहारा डेजर्ट, और हमने डेजर्ट में दे रहा है कि डेजर्ट में देखते हैं जनरली मूवीज, और हम सुनते भी है कि डेजर्ट्स में स्नेक्स बहुत पाए जाते हैं, वाइपर बहुत पाए जाते हैं, और वो दिखते भी नहीं है, समझ में भी नहीं आते हैं, और जस्ट रेतीले में से निकल जाते हैं। तो प्रिवेंट अवर सेल्फ फ्रॉम स्नेक, हाउ वी कैन चूज वन, कैसे उसको हम रिलेट करें कि उससे भी बचा जाए। फायर 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 को फायर, हम यूज फ्रॉम कर सकते फायर हैं ये। वी कैन फायर यूज अ से फायर। फायर से ये भी फायदा है कि इन केस कोई जंगली एनिमल है, वाइल्ड एनिमल है जो नाइट में हंटिंग करते हैं, तो फायर से उनको भी हम प्रिवेंट कर सकते हैं नाइट में। द ओनली अजम्पशन वी आर मेकिंग इज हमारे पास स्टिक या फिर कुछ वुड अवेलेबल है, दैट ओनली वी आर कंसीडरिंग। So, but that is the best, better option than mirror what we are discussing, cosmetic मुझे mirror. लगता है My हमें best. जल्दी डिस्कस करना चाहिए क्योंकि टाइम लिमिट में है हमारे पास, तो जल्दी I डिस्कस think we करना have चाहिए। already discussed Already, that first thing is first aid box, second is water, and the third priority is we have given to the blankets. Means peanut butter, peanuts, and the fourth priority we have given to the blankets, and the fifth priority we have given to the matchbox. यस यस। मतलब uh, वी कैन ऑल्सो If कंसिडर्ड, anyone wants, बट जस्ट मेरा ओपिनियन है कि हम रेजर ब्लेड का भी एज अ यूज कहाँ कर सकते हैं, जस्ट जैसे हमारे पास 13 पॉइंट है तो वी हैव टू डिस्कस 13 पॉइंट, देन लाइक 4 तो हमारा फिक्स हो I गया। think for shelter making we can use these things. Nylon rope we can use for shelter making, and swing kit is also there, na? So we can use this swing kit and nylon rope for making shelters so that we can protect it from high heat and low temperature. Like thing means, but we have to prioritize only the five thing. For rest of the thing I'm telling. नहीं, Done it या down? टोटली। uh, Yeah, nylon Yes, rope and sewing it can be used kind of fence, a kind of fence to be acting as a boundary or something. That is yes. one it option. it Yeah, that won't is one end up be a option. rigid one, यानी वो थोड़ा इतना Yeah, ये नहीं रहेगा, yeah, it that won't be a is rigid one, we yeah, can't be that sure is कि वो that बचाएगा is हमें। one problem. If we had हाँ, some kind of wood or something, that would have been good. yes. But unfortunately, we don't have any. Or for giving the signal, we can use a soda can. You are saying that mirror is soda are also means they are made up of aluminium. So if we can तो rotate उसे or fold it, reflector, so this can also be used as a reflecting mirrors. Those soda can also be used in for drinking purpose and for reflecting purpose. Soda can also be used for सो the आफ्टर means you are आफ्टर if you are 5 saying प्रायोरिटीज ना, वी कैन आल्सो बीन लिस्टेड डाउन कि उसके बाद क्या कर सकते हैं, हाँ लाइक वी उसके बाद क्या कर हैव। सकते हैं. But we have to means sir have given only for the five priority we have या to या हम श्योर select. शॉट लिख लेते हैं अभी, हमें जो जिस पे हाँ डाउट है 1 और 2 डिस्कस करना है वो करते हैं। सो फर्स्ट इज फर्स्ट एड बॉक्स, करेक्ट। सेकंड या इज एग्री। द 75 लीटर वाटर। वाटर थर्ड ठीक। थर्ड व्हाट शुड वी कीप, फूड और ब्लैंकेट, बिकॉज ब्लैंकेट फूड, विल आई थिंक फूड 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 आई थिंक No, फूड इज वेरी फूड के इंपॉर्टेंट। साथ जाना चाहिए। as we are human beings, we can actually survive 4 to 5 days without food also. विदाउट I think we have ब्लैंकेट, to go बिकॉज for the blanket. I think we हाइपोथर्मिया, have to हाँ, go for the blanket We can because go at ब्लैंकेट for night time we are blankets. not able to survive for so many long time. I think we have to go for the blanket here. ओके Then ओके देन fourth priority we have थर्ड to keep फूड। Yeah, uh, food, to food. the food. फोर्थ इज फूड Fourth एंड priority फिफ्थ is इज food. मैच बॉक्स रखना है या नहीं रखना है, अभी मैच बॉक्स और अभी रखना है, इट्स वेरी Match लाइक box. इंपॉर्टेंट। एवरीवन सेड ना कि मैच सो बॉक्स बहुत सारे तरीके से यूज कर सकता है, फॉर इंडिकेशन, फॉर बर्निंग, हाँ टू प्रिवेंट we अवरसेल्फ can फ्रॉम we, हार्म, और मैं we can लाइटिंग take पर्पस। match तो box. एज अ ग्रुप ओपिनियन वी कैन कंसिडर We एज अ can keep मैच बॉक्स yes yes फिफ्थ वन। तो okay, fifth हमारा one फिर yes. टॉप फाइव तो हो गया है फिर अभी भी। हाँ top 5 ठीक is है done. फिर। Have we missed anything? Maybe we'll discuss the what other 8 options were there. So उसमें से जो भी use वाला है, we can just cross check once कि हम कुछ miss out तो नहीं कर रहे हैं ना।
Actually, this is desert, so rope का थोड़ा ये रहेगा disadvantage because there will be no kind of trees or these things. बहुत So we'll have limited options, I guess, limited usage. Done? Yes, 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 sir. Would you Yes, like to sir. give now? Yes, sir. Conclusion? 5 Yeah. points. Go ahead. Sahil, you can go. Sahil, you want to conclude? Okay, so sir, we have prioritized the five main things. First, we will keeping first aid as the first priority because we have a plane crash, so most of the people get wounds. So for means for recovering from those injuries, we have taken as a first priority for first aid, and second for hydrating ourselves in desert, we are keeping 75 liters of water, and third priority we have given to the blanket because at the night time we have to survive for long duration because at night time the temperature is drastically reduced in Sahara Desert. So we have keeping the third priority as a blanket, and fourth priority we have given to the peanuts because we want to get some energy. We want to have some food. So we have given the peanut as a fourth priority, and the fifth priority we have given to the matchbox because this can also be act as a various other thing means बहुत सारी चीजों के लिए हम उसको यूज कर सकते हैं जैसे कि इंडिकेशन के लिए हो गया और जैसे कुछ जो भी हमको एनिमल्स हैं उनको जैसे मार के पकाना है तो उसके लिए भी अपन यूज कर सकते हैं तो ये 5 प्रायोरिटी हमने सर डिसाइड की है एज अ टीम ओके सो ये जो आपको दे रखा था उसने 15 मिनट्स वाला व्हाई वाज दैट गिवन data that 15 minutes you are away from civilization. Yes sir So the thing is that actually, sir, when I read the statement properly, I understand that there were nearly 11 people in the plane, and when we speak of a 11-seater plane, I think that just before it could crash, it would be gliding. So hardly it would need almost some speed close to 200 kilometer per hour if it was gliding, and 200 kilometer per hour and 15 minutes roughly accounts to 50 kilometer from the nearest civilization. So just that to maybe to get the rough distance from the nearest civilization, that fact was given. So why that was given that you are 50 kilometer from the civilization? Accordingly, prioritize the things which Yes, sir. Because sir, 50 kilometer means we can maybe if people are not that much wounded, then they can actually walk and actually travel 50 kilometers if they give themselves maybe 5 or 6 days. Accordingly, they can keep water and essential commodities, as my friend said, food, blanket, and all other things with them. They can approach if they have 50 kilometers. They can walk also, if possible, within 5 to 6 days. Okay, let me tell you. Whenever there's an air crash, like helicopter or aeroplane crash, and if you survive, don't go anywhere. Stay there. Why? Because whenever there's a crash, rescue team is going to track you soon. Yes. Because there are signals there, everything is there. Within hours, they reach the crash spot. You cannot walk. Because it is air crash, you will be very much wounded. Not small, very much wounded. You cannot walk. There's another reason. Third is you don't know which side to go. Because if it is desert, which side would you start walking? Yes sir. Even if there's a co-pilot and this fellow crew fellow, they might help you in that particular situation. I mean, where to go. But then advisable is don't go. Be there. So why he gave you then crew member and pilot, co-pilot? Because eventually you have to send signal. Some compass or something with them? Not compass, but aeroplane is a very complicated machinery. So they can always send signal to air traffic controller or someone. From there, rescue team can come and they can detect you. Because if my mobile phone is switched off and lying somewhere, maybe you cannot trace me. But if my mobile phone is on, you may trace me. Similar to that, aeroplane may also there's a lot of machinery. So these crew member and pilot know that if they use this kind of machinery, then rescue team can get you and they can reach up. So that is for that purpose, I think you want to use them. So everything which is given in the
your this task, you need to read it very carefully. There are some Yes, sir. traps also, like you're 15 minutes from the civilization, that means hundreds of kilometers away. You cannot start walking. It is not possible for you. But you are stuck up in jungle. Suppose you are stuck up in jungle, then people don't know where you are. Rescue team will not come. You are on trekking and you are in jungle, then you have to find your way out. But in aeroplane crash that is not required. Now, water, food, blanket, these are bare minimum requirements. If you see desert में the snakes and scorpion, these kind of insects are there. To protect yourself from these dangerous, these reptiles and these insects, what you have to do is you have to take help of fire. They are afraid of fire, so you need to take help of that. Now, if there is no fire in the plane, then you can make use of plane also to stay. But if there is a fire in the plane, you need to be away from the plane because there can be another blast. So this is what that topic task was given. Now you guys are in position to speak. I mean, all of you are talking. That is a good thing. That is not a problem. But the content has to be there. You need to think very innovative, and then you have to answer. First aid box is, crashment is very difficult for you to survive. I mean, it's a very serious damage actually. First aid is okay. I mean, you can use it. Water is also okay. Food is also okay. Blanket is also okay. So these are 4 or 5 things which you need to have at your side. Other things were more or less trap. What you will start doing, you will start catching someone. Mirror is if nearby passerby, daytime pe. Somebody is passing by 1 or 2 kilometer distance from you and you can, reflection, make some kind of reflection. But then there is a lot of wreckage also, aeroplane wreckage also. They will otherwise also get to know. Yes, sir. This is how you need to understand the things, right? Yes, sir. My side, no, anything you want to ask or tell? इसमें हम एक assumption करें कि जब crash हुआ तब signal send हुआ है, so we don't have to move. But is that what we need to consider? Or Yes, obviously. Because आप walk Yes, sir. कर नहीं सकते ना, 100 किलोमीटर कैसे travel करोगे आप? And do you know one thing, that desert में walking is very difficult? You know that? Yes, sir. yes, You can't walk. 100 kilometer in desert is as good as 200 kilometers on the road. Desert में you can't walk easily. Walking is out of question actually. But that was a trap. So stay there, survive. so priority could have remained same, but our approach was something deviating. Like You should have highlighted these points which I'm telling you. Yes, Why sir. he gave you pilot is survived, crew is survived. Why is telling you that? Now you will say, sir, how? What if a crew member does not know? What if a rescue team does not know where we are? There is a reason he has given you pilot and crew member. You need to make a link. This is how it was given, right? The rest is, I think, you need to practice. So group task, whatever HPCL group tasks are there, just go through these tasks. Make some kind of intelligent understanding of that. What you will say? as a group sir, how we perform, because हम consensus पे तो बहुत जल्दी पहुंच गए, but the नहीं, approach लेकिन वहां पे नहीं पहुंचोगे क्योंकि वो 13 आइटम्स देगा ना तुम्हें. He is giving you 2-3 pages of task. Whatever this is shown to you, that is a crux of this. But there he explains it very in detail. 3-4 pages का task होता है वहां पे. So you will not reach so fast. Don't worry. 3-4 pages means didn't get, means the list will be more or the options will be closer, like that. Yeah, he gives you entire 3-4 pages of task. He will be writing in detail about the things. Right? So it is not that precise. Couple of pages are there. सर आउट ऑफ 10 कितना मिलेगा सर हम लोग को ग्रुप को आज? मेरे को तो 6.6 6.7 अगर ग्रुप की बात की जाए. Two people are talking and understanding each other. So 6-7 बच्चों का ही ग्रुप होगा. एक्चुअली ऑप्शंस क्लोज नहीं थे इसलिए थोड़ा जल्दी कंसेंसस बन गया. थोड़ा ऑप्शन और ज्यादा क्लोज होते तो मे बी देयर माइट हैव बीन सम डिबेट. No, I mean 13 points were there. He will ask you to put all the 13 points, not 5. अच्छा 13 का प्रायोरिटी ऑन द सबका 13 को बोलेगा. And if you feel that 2 things are equally important, put them at the same category. Don't worry.
Okay, sir. That can also be done. सर एक और डाउट था सर सर Yeah. सर मैं ये पूछना था कि जब जब प्रायोरिटी वाइज आता है तो स्टार्ट करता है तो क्या उसे पूरा प्रायोरिटी बता देनी चाहिए कि मेरी ये जो No, no, इंट्रोड्यूस no. करता है He is not to tell even a single priority. He is to tell, okay, let's start discussion. Okay. Introduction में you are not to tell the list. तो मैंने वैसे पूछ लिया था तुमसे, हर एक कोई everybody should tell. Otherwise, you should not tell priority. Okay. That is not to be told. It is only through consensus you have to build. Okay, friends, number one, what do you think it should be number one? Okay, well, number one is okay now. What should be number two? Okay, number two is okay now. What should be number three? That is how you should proceed. Yes. अभी सर कुछ टास्क में प्रायोरिटीज जो होता है, एक दो टास्क से देखा था, उसमें प्रायोरिटी का मीनिंग ऐसे नहीं था कि आपको 1 2 3 4 करना है, आपको ऐसा था कि मे बी जो भी दिया है उसका आपको कैसे ऑप्टिमाइजली यूज कर सकते हैं, ऐसा था. सो हाउ द वर्डिंग्स प्ले मींस प्रायोरिटीज ही रहेगा या फिर उधर कुछ अलग वर्डिंग है ऑप्टिमाइज? प्रायोरिटी तो अगर लिस्ट दे रखी है तो प्रायोरिटी का मतलब 1 2 3 करना है. लिस्ट नहीं दे रखी है तो ऑप्टिमाइज करने के लिए बोलेगा. नहीं, उस टास्क में आई थिंक लिस्ट ही दिया था, बट the wording was like prioritize, but I think the solution was given according to the optimization की इस रिसोर्स को आप कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते थे. I think the similar case but not air crash, some different crash. Okay, so you need to tell me actually what it was, then only I'll tell you. I couldn't recall now, but it was regarding optimization and not prioritization. Can be वो डाउट था सर कि जब वो कंक्लूड करने के लिए वो बोलेंगे या हम टीम एज अ टीम हम डिसाइड करेंगे कि हमने conclude. He will tell you to conclude. He will tell you. Okay. Then only you will conclude. Otherwise, keep discussing. What happens सर अगर हमारा अभी पहले कंक्लूड हो गया था, सो रिमेनिंग टाइम में नहीं, वो बैठे होते हैं, उनको पता लग जाता है. जैसे मेरे को पता लग गया, मैं आई जंप्ड इन. मेरे को लगा होता तुम 2 3 पे पहुंचे, 4 पे पहुंचे तो नहीं बोलूंगा मैं कंक्लूड करने को. वो तो साथ में बैठे होते हैं, राइट? So just increase your content wise you enhance yourself. The rest I think is okay. I've sent you the audio clip of all the feedbacks of yesterday, 3rd of Feb, and Yes, sir. today I've told you about this. So keep practicing more, because more the practice, Sir, better it will be. sir, one doubt. Sir, can we do something with the wind in the desert, like wind direction in the desert? Is there any use of Wind direction changes in the desert? desert. That changes in the desert. It does not remain same. high pressure, low pressure zones. It changes actually. Okay. Sir, I thought maybe is it sea breeze, sir? I think yes, sea breeze, isn't it? Huh? Sea I breeze. think, yeah, sea breeze. I think, or land breeze. I'm not sure, sir. I think sea breeze, where wind blows from sea to land. So That accordingly, is daytime, we can nighttime. insert some- Daytime, nighttime, that shifting is there because of heating of land and heating of sea. What is your question? Sir, actually, when wind is blowing from one side during the daytime, I asked you whether we can conclude that. So we have to go in the opposite direction so as to reach somewhere near the sea. No, but Sahara Desert में sea नहीं है ना. So, There is sea near Sahara Desert. It is far, maybe far away. सर इसी केस में अगर एयर क्रैश जंगल में होता, सो लाइक उधर हमें रोप वगैरह भी कंसीडर करना पड़ता ना, मींस आप वहीं बैठे रहते, स्टे देयर. जब भी एयर क्रैश या हेलीकॉप्टर क्रैश है, बी देयर, डोंट रीलोकेट. They will catch you soon. You just check it out. Whenever there is a crash, very soon they reach you. Aeroplane crash में क्या होता है कि they may not detect you because of signals are not there. But crew member is there, just switch on the signal, they will catch you. अगर Yes, sir, mobile there is one black box is also there, sir, in a aircraft, black box. Black box So they also can they detect. trace, yes. Yes. Chalo, then I think that's it. We have concluded this and then keep revising this. Fine. Yes, thank you, sir.